Good morning, students. Welcome to class 7th. This is your English literature class. Today, I'll proceed explanation of the same lesson which I was explaining yesterday. This is lesson number 2 and name of the lesson is The Hero of Tiger Hill. This is part 6. Look at the screen. So today we'll start our explanation from page number 16 and from here this paragraph. We made plans. We made plans on how. From here we'll start. Let's see. We made plans on how to accomplish our task and finally on 2nd July we set out to accomplish our goal. So here we see that soldiers made plans. Soldier made plans to accomplish their task. And what is their task? Their task is to gain victory over Tiger Hill. And it's written, finally on 2nd July, we set out to accomplish our goal. So set out means what? This is set out. Set out मतलब begin a journey, किसी यात्रा की शुरुआत करना. So all the soldiers started their journey or set out to accomplish their goal. And what is their goal? Their goal, their aim is to achieve success, to achieve victory on Tiger Hill. So overall we can say that now soldiers are ready and had begun their journey towards climbing Tiger Hill so that they can achieve their goal. Next line. The whole battalion moved together. पूरी बटालियन एक साथ चढ़ाई के लिए शुरू हो जाती है on Tiger Hill. वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं and they start climbing on Tiger Hill. The attack could only happen at night as the enemy from their heights could observe us from afar. So here it's written that attack could only happen at night. It means that Indian soldiers can attack on Pakistani soldiers only at night. Why only at night? Because from their heights could observe us from afar. Because जो पाकिस्तानी soldiers है वो बहुत height पर है, ऊंचाई पे हैं. They are on Tiger Hill. So अगर वो दिन में चढ़ाई करेंगे, अगर इंडियन सोल्जर्स दिन में और अपने एनिमी को अटैक करने के लिए जब चढ़ाई करेंगे तो इतनी हाइट से पाकिस्तानी सोल्जर्स और एनिमीज कैन ईजिली वॉच देम, कैन ईजिली सी देम क्लाइंबिंग. उन्हें चढ़ते हुए देख सकते हैं. दैट्स वाई Indian soldiers have decided to begin their journey of climbing Tiger Hill at night. Next line. If we had attacked during the day, they would have shot down our jawans. आगे लिखा है कि अगर वो दिन में चढ़ाई करते, अगर दिन में इंडियन सोल्जर्स टाइगर हिल पर चढ़ना शुरू कर देते तो क्या होता? एनिमी उन पर अटैक कर देते एंड उनके बहुत से जवान, जवान इज़ अ हिंदी वर्ड, जवान मीन्स सोल्जर्स, सो बहुत से सोल्जर्स मारे जाते एनिमी के द्वारा. Hence we could only attack in the dead of night. इसलिए that's why Indian soldiers have decided to attack their enemy in the dead of night. Dead of night means मध्य रात्रि इन हिंदी कॉल, मतलब बहुत गहरी रात में 12-1-2 बजे की जो रात होती है उसको बोलते हैं डेड ऑफ नाइट एज अ फ्रेज. दैट टू व्हेन द मून वाज हिडन, और आधी रात में प्लस वन थिंग मोर व्हेन द मून वाज हिडन, जब चांद बिल्कुल छुप गया. यू नो ना दैट समटाइम व्हेन इट एक्चुअली नाइट, जब मिडनाइट होती है तो चांद बादल में कई बार छिप जाता है, तो बहुत अंधेरा छा जाता है. सो एट दैट टाइम सोल्जर्स डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ क्लाइंबिंग द टाइगर हिल. नेक्स्ट. आफ्टर एन arduous climb for 2 days, during the night of July 3 to 4, we went through a tremendously difficult path.
Here it's written arduous. What is the meaning of arduous? Difficult and tiring, मतलब बहुत मुश्किल और थका देने वाला. So जब ये रात में अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं इंडियन सोल्जर्स, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. ऑन विच डेट वॉज? डेट इज़ गिवन जुलाई 3 to 4, यानी 3 से 4 जुलाई के बीच की बात है. एंड दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन टाइगर हिल. दे वेंट थ्रू अ ट्रिमेंडसली डिफिकल्ट पाथ. वो बहुत मुश्किल भरे रास्तों से उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे. वाई? बिकॉज you know that it's very difficult to climb any mountain or a hill because it's slopey, it has pointed peaks, a very small path, बहुत छोटा रास्ता था. But hearing the stone sliding under our feet, the enemy surmised that the Indian army has reached this area. But what happened that as the Indian soldiers were climbing on the hill, on the Tiger Hill, so because of small stones which are present there on the hill, those small stones slipped down. वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो पहाड़ में होते हैं वो चढ़ने की वजह से नीचे गिरने लगे. एंड उनकी आवाज़ से जो एनिमीज थे उन्हें पता चल जाता है डैट इंडियन आर्मी हैज़ रीच्ड इन दिस एरिया, कि इंडियन आर्मी हमारे एरिया में, हमारे टाइगर हिल में पहुंच चुकी है. दे ओपनड फायर ऑन अस. ओपनड फायर ऑन अस मीन्स दे स्टार्टेड फायरिंग, यानी जो एनिमीज थे वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं. When the firing started, there were only 7 jawans who were ahead. जब फायरिंग स्टार्ट हुई, जब एनिमीज ने गोली चलानी शुरू करा, so there were only 7 jawans, means 7 soldiers were present there. The others were slowly reaching up from below in a line, and many other soldiers were reaching. They were still at the back side, or you can say they were still below in a line. A bit of path was blocked and only those 7 jawans had been able to reach this higher spot. So what actually happened that when suddenly firing started, so other soldiers which were below of those 7 soldiers which are present ahead, so they got struck there and only 7 soldiers were there in front at the higher spot. We reached up to 8 to 10 feet level with Pakistani bunkers. So ये जो 7 soldiers हैं ये करीब 8 से 10 फीट हाइट पर, ऊंचाई पर आ जाते हैं. किसके? पाकिस्तानी बंकर्स के. पाकिस्तानी, you know, and what are bunkers? Bunkers actually mean a strong underground building that gives protection in a war. अंडरग्राउंड एक बिल्डिंग जैसी बना ली जाती है जब कोई वॉर होती है तो हम उससे प्रोटेक्ट रहते हैं उस वॉर में. सो उस अंडरग्राउंड बिल्डिंग जो पाकिस्तानी बंकर्स थे उनके 8 से 10 फीट ऊपर वो 7 सोल्जर्स आ चुके थे. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.